got it. To start that, sir. Okay, ma'am. Okay. Respected faculty members and dear students present online and offline, a very good evening to all of you. It gives me great pleasure to welcome you all to our today's guest lecture on attitude determines altitude. IDP Cell GADVASU has started a series of soft skill guest lectures, and our today's lecture is the first one, which will be followed by other similar soft skill activities. So we are having among us a great personality, Dr. Sarabjeet Singh, who will deliver a talk on attitude determines altitude. Dr. Singh is professor and head Department of Agricultural Journalism, Languages and Culture, and he is also director, Placement Cell and Guidance Cell, PAU Ludhiana. It is great honor to me to welcome Dr. Sarabjeet Singh in our today's event. Welcome you, sir. Brief introduction about Dr. Sarabjeet Singh. Actually, it is difficult to introduce such a great personality in few minutes, but I will try to share some of his key accomplishments. Dr. Singh worked as principal investigator in the multi-institutional and multidisciplinary project of National Agricultural Science Fund on farmer suicide prevention. He is the youngest resource person of Human Resource Development Cell PAU and founder honorary director Ask Kiran De-Addiction Center under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Dr. Singh has authored 16 books, 13 research articles, and more than 300 popular articles. He was honored by Government of Punjab on 550th Prakash Purab of Shri Guru Nanak Dev Ji, and he was selected among 50 gems of Ludhiana, which is included in the book Ujjale Moti. He has always endeavored to inculcate human values among students to face challenges in a more informed way and proactively involve them in nation building and also consult them in hours of distress. With this brief introduction, I welcome you, sir, to our university. We are really delighted to see you today and listen to your important soft skill lecture on attitude. Sir, I want to inform you that about 40 students of first year batch of BTech Dairy Technology will be attending offline in this lecture room, and approximately 40 to 50 participants will be online. Now I request you, sir, to kindly deliver your talk and interact with the students. Sir, please. Thank you, Dr. VP Singh, dear faculty members, students in this classroom as well as online. So my topic today is attitude determines altitude. I hope all of you know the meaning of attitude. Yes, can anyone explain? Just give what you mean by attitude. Yes, anyone? Please speak out. Like a popcorn जिਵੇਂ उछलते ने ना हमें उछल के बोल दो जी. Yes, come on. Our nature. Okay. What's a Hindi or Punjabi word for attitude? Anak. No, beta. No. Anji? Nazariya. Yes, Nazariya is the right word. Soch. Beta, it is said that change your attitude and your life will be changed. What I said? Change your attitude and your life will be changed. Soch badlo, sansar badal jayega. And if any one of you, those of you who wish to change your lives today, I can certainly say today can be a turning point in your life. I will be sending some catches, both offline and online. Okay. Otherwise, if I throw a catch, you will catch with your hands. But now I will start throwing catches of ideas. And that you will be catching by your mind. Of course, you can write. So the first catch for you is change your attitude
and your life will be changed. Attitude, as you said, is soch, the zariya, how you look at a situation. अच्छी सिचुएशन को भी आप गलत तरीके से देखोगे, गलत हो जाएगी, और गलत सिचुएशन में भी आप अच्छा एटीट्यूड रखोगे, you can find something out of that. It is a mindset, it is an outlook, how you look at a situation. Life is not what comes to us, life is how we react to that, and that relates to your attitude. And wonderful thing about attitude is that, beta, you can change your attitude, you can modify your attitude at any stage of life. Yes, at my stage or other faculty member stage, it will be a bit difficult. But at your stage, you can change your attitude and you can dramatically change your life. To bring home a point, I would like to narrate some incidents. One person, there was a battle going on, and a commander, in the midnight, the Sipahi came to him and said, "Commander, we are surrounded by an enemy from all sides." So you know, spies, है ना? की कहते हो हिंदी की कहते हो हैं? जासूस, yes, जासूस is the right word. जासूसों ने आगे बताया कि सब तरफ से हमको घेर लिया गया है नाइट के टाइम पे. अब होना क्या चाहिए जी? वो कमांडर भी घबरा जाए और सारे जितने सिपाही थे वो भी घबरा जाएं? नो. यू नो व्हाट हैपेंड? कमांडर ने ऑर्डर किया, सारे आ जाओ, एवरीवन फॉल इन. रात दे 12-1 बज रहे ने, सुत्तियां सब ਨੂੰ उठाया. कमांडर laughed, he smiled. सारे कहंदे ने कमांडर ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कि रात वेले सानू उठा रहा है ते खुश हो रहा है. What happened? Can you guess कमांडर ने उस दिन अपने फौजियों ਨੂੰ ਕੀ किया होएगा? कहंदा wonderful, hooray, my dear comrades. कहंदा अगे मैं तुहानू कहंदा हुंदा सी इधर फायर करो, इधर करो, इधर करो. अज तुहाडी मर्जी, अज जिधर मर्जी फायर करो. This is the attitude. What happens, beta? Before the problem becomes problem, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ. In my university, I tell my students, I have given a new word for problem. Can you guess? Problem आए तो ये ना को problem आई है. What English or Punjabi word, Hindi word can be there? Yes. Well tried. करो बेटा. Smile. नहीं. Problem आई है, उन्हें की कहांगे भी की आया है? Opportunity. Who said challenge? Very good. Give him a big hand. Very nice. The moment you say, I have a challenge, you are ready to face that. It means you are in combat mood and the challenge will subside. But the moment you say, problem I have, what happens? It seems problem is getting bigger and you are getting weaker. This is the magic of words. Magic of words. चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं. तुसी बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो जी. देखो अच्छे जवाब देते हैं. Very nice. I teach communication, beta. I am a professor of journalism and mass communication. Can you guess what is the most powerful drug ever used by mankind? ध्यान रखियो कि ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਖ. Saying something to me? I should face the camera only. नहीं, किसी और नहीं करना. नहीं कोई और था. ठीक है. मैं इत्थे गल करांगा फिर नहीं हो पाएगी. मैं ते सारे नाल करांगा. Okay.
What is the most powerful drug ever used by mankind? Sharab, charas, afeem, ganja, narcotics, prescription drugs, capsule injections? No. Cocktail of all of them? No. थोड़ा मैं हिंट ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ word is the most powerful drug ever used by mankind ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰਦਾ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ and if you tell yourself I am a weak person I am weak I can't succeed what will happen you won't succeed as sir told you that I am working for farmer suicide prevention in Punjab and I have given a slogan to young farmers I say and I am sure you can complete that slogan bade intelligent class hai todi jit sochange jit javange haar sochange it is so simple if you have a winning attitude you will win but if you have a defeating attitude weak attitude negative attitude it is said if you weep problems will heap what is heap ढेर लग जाएगा रोगे मुश्किलां वध जाणगियां and if you laugh problems will be off how to take a situation depends upon your attitude and I wonder why attitude is not taught in our institutions मैं दोबारा छोटा हो जावा ना तो मैं कहूँ सब तो पहला मैं ध्यान अपने एटीट्यूड का करांगा attitude is such a powerful thing that it can change your lives and for changing your attitude you need powerful words no you need powerful words you have to take care of the sentences and the words you are using for yourself there's one book you can write beta book da naam hai attitude is everything agar tanu mauka mile pocket vich paise hon best cheez hai attitude is everything the author says ke 30 din 30 days de vich jo main keh raha roz ਇਹ bolo ਇਹਨੂੰ feel karo and this will come into you is it possible or not चलो एक छोटा जी एक्सरसाइज करांदे हैं जी ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं जी सारे थोड़े सीरियस हो जाओ जरा सीरियस मुंह बना लो स्माइल नहीं करना करोगे सारे जस्ट 1 minute एक्सरसाइज करोगे चलो जी देखते हैं कौन करेगा सारे बोलो मेरा सिर दर्द हो रहा है मेरा सिर दर्द हो रहा है आई एम हैविंग हेडेक बोलो जी स्माइल करके नहीं बोलना यार सीरियस होके बोलना है यू नो व्हाट विल हैपन इट विल स्टार्ट करके देख लेना बेटा हो गया शुरू yes it is possible in one of my classes मैं हर साल अपने फ्रेश बच्चे जेडे आंदे ने मैं एक्सरसाइज जरूर करांदा एक साल एक क्लास बड़ी ढीठ आ गई जी कहंदे सर ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ मैं कहा ਜਦੋਂ करोगे ना ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ within 20 seconds one girl raised hand sir please stop it sir mera shuru ho gaya 20 seconds you were all right you were attending a session attending a class just for 20 seconds you said to yourself I am having a headache and it started
Can any one of you tell me कि मैं गल तुहानू क्यों दसी? Very good. Yes, बच्चे लिए clap कर दो जी. Very nice. Unfortunately, I am not carrying any gift for you, but मेरा promise है जी sir. Very good. I go to so many places, so many classes, and nobody is there to answer this question. Here, the first answer is right. Very nice. इसका उल्टा भी ठीक है भैया. अगर हम कह रहे हैं सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द शुरू हो गया, और कभी हो रहा है तो आपको नहीं नहीं कोई बात नहीं तो वो ठीक भी हो जाएगा. करके देख लेना बेटा. Yes, it is all in your thoughts. We are what we think. लिख लो जी, बड़े काम आएगी बात. लिखने के लिए है कुछ की नहीं. We are what we think. We are our thoughts. If you are using weak words, if you are using defeating words, you will be defeated. And if you are choosing powerful words, you know, when this project came to PAU, Punjab Agriculture University, on farmer suicide prevention, the first thing I did, I changed the name of the project without any permission from ICAR. पहले मेरे को किसी ने कहा नहीं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी. मैंने कहा नहीं यार, कुछ ऐसा करते हैं बिना परमिशन के बात बन जाए. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रिपोर्ट में उसका नाम चेंज, नाम की फोटो भेज दी. मैंने कहा ऑब्जेक्शन करना होगा कर देंगे. किसी ने नहीं किया. मैंने 3 साल वही प्रोजेक्ट भी चला दिया. मैंने नाम पता क्या रखा उस प्रोजेक्ट का? था फार्मर सुसाइड प्रिवेंशन. I named that as उत्साह. सारे बोलिए फिर बोलो, फिर बोलो. उत्साह बोल के क्या आ गया? उत्साह आ गया. This is the power of words. If you use powerful words for you, your attitude will change. Subtle. तो पता भी नहीं लगेगा मेरा एटीट्यूड बदल गया. Think of yourself, what words you use for yourself. At this time, you are listening to me. Yes, all of you? Yes. But you are doing one more thing. सारे offline वाले भी online भी एक चीज और कर रहे हो भाई. की कर रहे हो? Number 1, you are listening to me. Number 2, you are not speaking. जो मैं बोल रहे हो तो नहीं speaking. Watching. चलो और की कर रहे हो? Thinking नु की कहोगे? सोचना. You are doing self talk. Yes. ऑनलाइन तो भी आवाज आई सी जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ सुननी चाहिए है ना. Okay, sorry ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा ध्यान इधर चला जाता. ਤੁਹਾਨੂੰ भी टाइम देंगे जी. All of us are doing self talk. No? कोई ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हो सो ते घर भी चले गए हो. मासी घर, बुआ घर, है ना, प्लेग्राउंड भी चले गए हो. नहीं? This is such a powerful thing. Super computer I call it. 2, 3, 4 फाइलों ते इक्को टाइम ते काम होंदा रहिंदा. No harm in self talking beta. We all do self talking. But beware of self pity. Yes, can anyone tell? हैं? तरस खाना क्या होता है? अपने आप को विक्टिम नहीं समझना, अपने आप को कमजोर नहीं समझना. Self pity is like a snake that coils around you. सांप लिपट जाता है ना, and then that strangulates you. This is self pity. कहते हैं जब भी self pity आए, immediately उसमें से बाहर आ जाओ. Can you tell me what is the easy way to come out of self pity? It's a very beautiful catch I am going to give you, online and offline students. अगर मेरी अगली गल ध्यान नाल सुन लोगे, बहुत सिचुएशंस विच नेगेटिविटी तो बच जाओगे. What is the easiest way to stop self pity, to stop negative thinking?
to stop overthinking. Yes. अरे आप तो डेयरी साइंस से हैं, वो जानवर गाय भैंस क्या करती है, खाने के बाद क्या करती है, रूमिनेट करती है, जुगाली उगाली करती है ना। अरे जानवर जुगाली उगाली करते हैं, हम कॉग्निटिव रूमिनेट करते हैं, एक गल नूं सोची जाना सोची जाना सोची जाना। In my university, I am holding a course on SWOT. I hope तुसी सारे करदे होवोगे कि नहीं? SWOT, you know? Yes, sir. बच्चों नहीं पता। SWOT is yes online. Yes, sir. SWOT is S stand for strength, W stand for weakness, O stand for opportunities, and T stands for threats. आवाज आई आपको पीछे कि नहीं? SWOT, S for strengths, W for weaknesses, O for opportunities, T for threats. Thank you, beta. मेरे कल थोड़ा नाम नहीं पढ़ाया जा रहा, but anyhow you are right. Thank you, sir. Thank you. Welcome. About 2 years ago, I started SWOT analysis of my students in PAE. Placement cell च जेड़े भी आंदे सी, मैं कहंदा सी SWOT करो. And to my surprise, one thing was common in most of the students' weaknesses was overthinking. तो मैंने भी इसके ऊपर thinking करनी शुरू कर दी थी. How to reduce overthinking of my students? So beta, the wonderful tip for stopping overthinking is that control or deflect your first negative thought. जिस समय नेगेटिव थॉट शुरू हुई उसी समय रोक दो, उसी समय उसको डायरेक्शन चेंज कर दो, and the ensuing train and chain of negative thoughts will stop. बट अगर आपने फर्स्ट थॉट को एंटरटेन कर लिया तो पिछली ट्रेन सारी आ जाएगी अंदर. मैंने तो टी शर्ट पहनी है, शर्ट किसने पहनी है? सर ने पहनी है. आपने भी पहनी है, यस, है ना. अगर आप शर्ट का पहला बटन गलत लगा दो, बाकी ठीक कर सकोगे? नहीं कर सको, जितनी मर्जी कोशिश करो. Be aware, be alert about your first negative thought. Consciously stop that thought. Use powerful words and your attitude will be changed. This is such a powerful thing that we come to a point that it is the attitude that determines your altitude. What is altitude? हाइट. कहां पहुंचेंगे लाइफ में, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है. I recall an incident from US. George Washington. Have you heard about him? Washington DC है वहां पे. 2-3 वैसे Washington हुए हैं. चलो. One, George Washington was an army officer and he was known to be very hot-headed. What's the meaning of hot-headed? गरम दिमाग मतलब गुस्से वाला. हाँ, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर हॉट आता था, ऐसा नहीं. Once he shoot down an intruder on the border, thinking to be a terrorist, but he was an innocent American. शूट करन तो बाद पुछदा सी कौन है, तो पहला पुछना सी. अमेरिका दे विच तुसी किसे नु मारदे हो इस तरह ते बड़ी जल्दी एक्शन होया, कोर्ट मार्शल, and he was dismissed from job. 20 years jail. 20 years तो बाद जो बाहर आया ना, कहंदा मेरे सामने 2 ऑप्शन सी. नंबर 1 ऑप्शन, रेस्ट ऑफ माई लाइफ मैं यही रिपेंट करदा रहा, रोंदा रहा कि मैं इन्ना वड्डा ऑफिसर सी, मेरी जॉब चली गई, मेरी इन्नी बेइज्जती होगी, मेरी फैमिली ने मैंने डिसोन कर दिता, व्हाई आई शूट अ पर्सन, इनोसेंट पर्सन नु मारता, बस एदे च ही बिता दिया. नहीं नहीं नहीं, एक होर ऑप्शन सी कि मैं अपने उत्ते लगे इस दाग नु मिटा दिया. And I choose the second option. And that man worked so hard that one day he became president of United States.
This is the power of attitude. And see the altitude here. President of a US, the most powerful country. And that person who was dismissed from his job. But again, I am saying, work on your attitude, work on your thoughts. Think what you are thinking. नहीं? सोचो मैं क्या सोचती हूं, मैं क्या सोचता हूं. बस इतना ही प्रोसेस शुरू कर दोगे, आपकी सोच ठीक होनी शुरू हो जाएगी. Attitude is a great virtue. पता है कितनी ग्रेट है? Have you heard about Harvard University? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है किसी भी इंसान की सफलता में 85% रोल उसके एटीट्यूड का होता है. माय लॉर्ड, कितने परसेंट? 85. यानी अगर लाइफ में सफल होना है तो एटीट्यूड मैटर्स 85%. बाकी कितना रह गया? चलो 15 में बताओ क्या क्या आएगा जी. नॉलेज आएगी और स्टडीज आएगी और हार्डवर्क आएगा. बोलो बोलो. पैशन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, डेडिकेशन आएगा और बोलो वेल्थ आएगी, एक्सपीरियंस आएगा. कितनी बुक्स लिखी, कितनी बुक्स पढ़ी, कहां से पढ़े, गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी से पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना. एक चीज अभी भी नहीं बोली, 15 में और भी आएंगी चीजें हैं. यस, ऑनलाइन से पूछते हैं जी. लक. वेरी गुड. हु सेड? अरित्र मुखर्जी सर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. पता लग गया. लक, LUCK, इंडियन, हम बड़ी बिलीव करते हैं लक में, है ना. आई से इवन इफ यू बिलीव इन लक, लक कैन नॉट बी मोर देन 15%. 15 भी क्यों यार, बाकी भी तो होंगे. 14, 13, 10 से बड़ा लक भी नहीं हो सकता. बट इससे कितने ज्यादा टाइम्स है एटीट्यूड. बेटा, सिंस द डे आई केम अबाउट दिस स्टडी एंड दैट टू फ्रॉम हार्वर्ड, ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी की ये स्टडी नहीं है. I have started working on my attitude, working on attitude of my students, my family members, and everyone around me. Just change your attitude and your life will be changed. बुरा सोचोगे बुरा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा. सोचोगे नहीं कर सकता, नहीं कर पाओगे. सोचोगे मैंने करना है तो हो जाएगा. A real life example, I tell you, a student who studied MJMC, Master of Journalism and Mass Communication from our department, she passed out, marriage हो गई, baby हो गया. 4 साल के बाद मेरे को फोन आया, सर मैंने UGC का पेपर देना है. Welcome. She came to me, I guided her, gave her books. एग्जाम से 10 दिन पहले फोन आ गया, सर आई एम वेरी अपसेट, कल मैं आपसे मिलने आ जाऊं, मेरे को टाइम दे दीजिए. मैं कह नो बेटा कल तो बहुत बिजी हूं मैं. सर प्लीज 5 मिनट्स दे दो, आई एम वेरी अपसेट. जस्ट सर 5 मिनट्स प्लीज सर. आई सेड ओके. शी केम टू माय रूम, आई वाज बिजी, ऑफिस पीपल वर देयर, आई वाज साइनिंग सम पेपर, सम फाइल्स. सो मैंने इशारा किया बैठो. She said, सर नेक्स्ट संडे मेरा पेपर है, सर मेरी तैयारी ही नहीं हुई, सर मैं फेल हो जाना है. मैंने देखा, मैंने कहा बैठ, अभी तेरे से बात करते हैं, अभी इनसे बात कर रहे हैं. बैठते बैठते उसने दोबारा कह दिया, सर मेरी तैयारी नहीं हुई, मैं फेल हो जाना. हार्डली 4-5 मिनट्स मैंने पेपर साइन किए, दफ्तर स्टाफ को भेजा, पेन जेब में डाल के उससे बात करने के लिए तैयार हुआ. तो उसने फिर फर्स्ट सेंटेंस ये कहा, सर मेरी तैयारी नहीं हुई, मैंने. इट वॉज हाई टाइम फॉर मी. 5 मिनट में 3 बार सुन लिया मैंने. मैं थोड़ा सीरियस होके उसकी तरफ देख के चुप हो गया. मेरी तरफ देखने लगी वो. मैंने सीरियस होके कहा, मैंने कहा लगता है बेटा मेरे को भी तूने फेल हो जाना. कहती है सर. मैं क्या, व्हाट इज द पर्सन हु इज गिविंग हरसेल्फ अ कमांड
टाइम एंड अगेन मैं क्या दुनिया की कोई ताकत उन्होंने पास नहीं कर सकती। कहती सर फिर की करा? मैं क्या सवेरे दोपहर शाम बार बार बोल मैं पास होना, मैं कल्ला ही बोलना नहीं, तैयारी भी करनी। एंड बेटा बिलीव मी, I have seen that my student cleared the exam. Power of self-talk, power of attitude, winning attitude, positive attitude. In all situations, go in for BF. BF की होंगे? हाँ, खुश हो गए थोड़ी उम्र च BF बॉयफ्रेंड नहीं चलो बॉयफ्रेंड तो याद रख लो। BF मींस बेनिफिट फाइंडिंग। Whatever problem comes to you, देखो कोई इंसान ऐफो जिहा नहीं है जेड़ा कहे भी सारा कुछ मेरे अनुसार हो। Many things will come to your life, तुसी कुछ नहीं कर पाओगे। इवन मोदी साहब को भी आई, ट्रंप भी सारा कुछ नहीं कर सकते ना, वो भी हर एक दा अपना अपना लेवल है। बट नो ह्यूमन बीइंग कैन क्लेम कि मैं सब कुछ कर सकता। नो, सब कुछ मेरे अनुसार होता है, नहीं हो सकता। Something that you cannot do anything, then start finding benefits out of that. Have this attitude कि यार चल होने दे नाल ऐ फायदा हो गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਇਹ फायदा हो गया। ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੁੱਟੀ, ਦੋਨੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ। This is very important, beta. Search for benefits in all situations, especially the situations out of your control. This is your attitude, how you look at a situation. Accept others as they are. You can't change others, but you can change your own self. So beta, this is a powerful tool, powerful virtue. If you have this strength in your character, yes, I'm saying character strength. मैं भी बड़ी देर तक सोचता रहा skills are important. पहला तो एज दे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ सोचते ਸੀ knowledge is important. थोड़े ਵੱਡੇ ਹੋਏ पता लग गया यार knowledge ਨਾਲ कुछ नहीं होना, skills are important. But ਹੁਣ पता ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है, skills नाल भी कुछ नहीं होना। Your character strengths are important. How honest you are, how dedicated you are, how resilient you are. Yes, all of you know the meaning of resilience. Pardon? No. Resilience. Yes. Online people, please come to our rescue. What is resilience? Flexible? No. Yes, anyone? 34 participants are there. फटाफट देख लेंगे, गूगल अंकल तो पूछ लेंगे। आजकल तो ये भी होता है क्लास है ना, उससे पहले लव लेंगे। वैसे मैं कहना गूगल अंकल ते यूट्यूब आंटी, यस, बड़ी पावरफुल जी। एंड बिलीव मी बेटा, दिस इंटरनेट इज अ ग्रेट लेवलर. You are from a village, remote village, or you are in Ludhiana or in Chandigarh, in Bombay or Delhi, now doesn't matter. Keda Google Bombay khulda hai na, wahi pind ch khulda hai. Okay, what is resilience? Resilience is your power to bounce back. मुश्किल आई, तुसी दब गए कि उन्ना ही खड़े होए कि बाउंस बैक कीते, उस तो भी पावरफुल हो गए। This is the great character strength. The Punjab people are known to be very resilient. किन्ने अटैक होए पंजाब ते, सारे हमलावर पंजाब तो ही होके अगे जाते सी।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। The most sufferers were Punjabis. So much so it was said that ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। But unfortunately beta, this spirit is now vanishing. You know, every year on 20th March, World Happiness Day is celebrated. And on that day, World Happiness Report is released. Kedi country happiness te kede level te hai? India first आंदी होएगी? नहीं। 124 te beta 2017 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ better ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਗੀ? So sure. Yes beta, unfortunately 2017 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ 122ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, 18 ਚ 133ਵੇਂ ਤੇ, 19 ਚ 140ਵੇਂ ਤੇ, 20 ਚ 144ਵੇਂ ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 12 ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ। And they have started saying India is one of the most depressed countries in the world. कमजोर हृदय वाला तो नहीं कोई सुन रहा अभी? नहीं, पर घबराओ ना। This is a पूरी कंट्री लेवल का सैंपल है। हो सकता है कुछ स्टेट्स, कुछ पर्सन्स थोड़े बेटर भी हों, बट वी कांट डिनाई दैट वी आर constantly and increasingly becoming victims of depression. What is depression? ठीक ठाक हाँ, लेकिन मैनू लगता मैं ठीक नहीं हाँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ होंदे होए I am feeling I have nothing. But I am going to give you a beautiful tip, and you can also take that, download that from PAU website. Home page te ek sada resource pe hai, ek ta resilience te resource hai, you can download free of cost. And another, a very beautiful booklet, just 32 pages the booklet hai, that is karoge gal milega hal. बोलना जी, करोगे गल मिलेगा हल, करोगे बात बनेगी बात। Talking is healing. If any of one of you is suffering, facing some peculiar problem and you are not able to come out of that, don't be silent. Don't be lonely. Share it. Talk to someone who can confide your secrets. The best way is talk to your family. नहीं? इस तो अच्छा तो और कोई नहीं हो सकता. But suppose there is some problem, then talk to your good friends. I am saying, get a friends? Good friends. एक friend inverted comma वाले होते हैं. वो कहते ने कैप्सूल खा ला, घुट ला ला, वो उक्का ही उन्हें खराब कर देते. नहीं, उन्हां नाल शेयर करोगे नुकसान हो जाएगा. Talk to your teachers, your mentors, elders. अगर इत्थे भी प्रॉब्लम है, then हाँ रब नाल ते है ये तो सब तो पहले. बेटा तेरा नाम की है? अर्पण. वे वंडरफुल, वंडरफुल. रब नाल गल करो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कर दो जी, क्लैपिंग कर दो. बिल्कुल. वैसे ना पहला मैं सोचता सी रब उत्ते रहंदा है ना. एक दिन मैं बड़ा देखा, फिर मैनू पता लग्या भी ऊपर नहीं रहंदा, वो अंदर ही नहीं बाहर भी है, अंदर भी है बाहर भी है ना. And if you realize that you have some connection with him, best way. चलो suppose करो जिन्हां दा non believers हो की करन जी, what can they do? Family नाल नहीं कर पा रहे, friends नाल नहीं कर पा रहे, elders नाल, mentors नाल, teachers नाल नहीं कर पा रहे, then अपने आप नाल नहीं कर पा रहे. और one more resource you must know. Okay, meditation ते चलो, yoga, meditation, रब एक कोई हो गया जी. और okay, these are the ways diary maintain करना. और किधे नाल गल करिए कि ठीक हो जाइए. फीस देनी चाहिए. Very good. Who said? Soumya Mehta.
Very nice, beta. Very nice. Talk to a therapist. Consult a psychologist. Psychotherapy, counseling lane. You may have to pay something. And beta, the other day, 2 weeks पहले मेरी Columbia University किसी नाल गल हो रही सी. The student said के साडे सारे teacher therapy ले रहे. It's so common. ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ. ਮੈਨੂੰ 104 ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 104 ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਪਰ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਰਪਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੁਪਾਵਾਂਗਾ. ਵਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ. And nowadays ਸਾਡੀ mental health ज़्यादा खराब होती है बेटा. So many students are coming to our placement cell. We have a full-time counselor now in PAU. This is a great, I feel, initiative of the university of our former vice chancellor. कि किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, farmers ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, counselor ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, therapist ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. और वो therapist ऐसे ने मैनू भी नहीं दसदी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਸੋ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਲ. ਡੋਂਟ ਬੀ ਸਾਇਲੈਂਟ. ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ. ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਵਿਕਟਿਮ. Feel yourself as a master. Control your thoughts and you can control your life, beta. And I sincerely believe that the students who will start working on their attitudes, they will one day remember this session. Today can be the start. Take some baby steps. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ. ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ. From where you have come, why you have come, what you are doing, what should you do. But ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ we are after the milestones, ਹੈ ਨਾ. First year, second year, then UG, then PG, then AP, then ਹੁਣ associate, then professor, then head, then director. Lifelong we are running after milestones and we forget to enjoy our moments. I believe, beta, with a little effort you can celebrate every day. Oh, you can celebrate every day can be a celebration. जिन्ना खुश असी पार्टी वाले दिन होने हैं ना, उन्ना खुश असी रोज हो सकते हैं. And not only every day, every moment, every second. Time है क्या सर? थोड़ा देर में ले ला. I just tell you, आज से बड़ा अच्छा मैंने सेशन लगा. You are very interactive. एक बुक का नाम लिखो बेटा, Thinking Fast and Slow. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਬਲਿੰਕਿਸਟ, ਉਸ ਐਪ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ. ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਕ ਹੈ. I own this book and this book is written by a Nobel laureate Daniel Kahneman. ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ laureate people ਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ. But I have seen with the Nobel laureates, they tell the thing, they write the thing in so simple words. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ. I'm going to give you one precious example. Daniel Kahneman, what he did one day in his class, he divided his class in 2 parts. Okay, sorry, इतना नहीं जाना मैं. Okay, मैं इतने बने आया जी, online वाले miss ना करें. Okay, he divided his class into 2. This part
and this part. Okay, एक छोटी जी डॉक्यूमेंट्री 5 मिनट्स ਦੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਪ ਯੂਰ ਪੈਨ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਊਥ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ? ਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਗਾ ਪੈਨ ਤੇ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੀਪ ਯੂਰ ਪੈਨ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਊਥ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ, ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਟਿਕ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਹੀ ਫਾਊਂਡ इधर वाले बच्चे ते इधर वाले बच्चों च बड़ी ज्यादा चेंज सी। इको ही डॉक्यूमेंट्री दिखाई। कैन यू गेस एनीवन? इधर वाले बच्चे ने की क्या होएगा? डॉक्यूमेंट्री अच्छी सी, चंगी सी के माड़ी सी? इधर वाले ने की क्या होएगा? यस एनीवन? क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। इधर वाले बच्चों का पेन इस तरह सी एंड दे वर इन ए फ्राउनिंग मूड, है ना? एंड दिस साइड they were in a smiling disposition. And he found के इधर वाले बच्चे कहते हैं सर awesome documentary, मजा आ गया सर। इधर वाले कहते हैं ठीक ठीक है, खास नहीं, रूटीन है। And he gave a theory, उस theory का नाम है reciprocal primitive effect। इसका मतलब पता है की है कि if you are in a smiling disposition तो सारा कुछ अच्छा अच्छा लगता है, and if you are in a frowning position तो चंगा चीज भी चंगी नहीं लगती। So remember students, it is not the position, it is the disposition that matters। मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर 2020 अनफॉर्चुनेटली शुरू असी कीता सी कि लेट्स मेक आवर कैंपस अ बीमिंग कैंपस। बीमिंग मींस स्माइलिंग कैंपस, सारे खुश खुश नजर आन, टीचर भी स्टूडेंट्स भी, कॉरिडोर से निकलो हेलो हेलो हेलो, है ना? बट चलो कोरोना आ गया जी, साडा सारा कुछ विचे रह गया। बट नेवरदीलेस वी कैन ट्राई इट। हुण तां लोग ये कहंदे ने कि अगर इवन इफ यू फेक इट, अगर फेक स्माइल भी कर रहे हो ना, यू मे बी एबल टू मेक इट। Smile is such a powerful tool. Whenever you are disturbed, you are perturbed, बड़ी औखी घड़ी है, बड़े घबरा रहे हो, start smiling. Calm down yourself. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੋਚੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਸੋਚੋਗੇ। And this power lies within our own self. We all are unique, beta. Each one of us is unique. We have unique talents, unique strengths, hidden strengths. उन्हां नूं बाहर आण दिओ। Work on your own self. जिन्ना दूसरे नूं जानन दी कोशिश करदे हां, उन्ना अपने आप नूं जानन दी कोशिश करिए, अपने आप ते वर्क करिए। And I am sure beta, with a positive attitude, all of you will be able to achieve great heights in your life। And I will welcome 5-7 minutes. If you have any questions, I can spare 5-7 minutes. Yeah, chat box which भी कोई लिख दे नहीं। Yes, there are 4 chats. Any query, online, offline? Very good. Yes, any language beta, Hindi, Punjabi, English, even I know Sanskrit, थोड़ी फ्रेंच भी। यस, एनी लैंग्वेज जी। पहला दे कुछ चैट्स है। हाँ हाँ, पहले दे चैट्स ने, न्यू चैट नहीं है कोई। यस बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी रिमार्क्स, एनी फीडबैक? सर यस, वेलकम। चलो
ऑनलाइन दी वारी पहला यस बेटा सर मैं एक मिनट ऑनलाइन दी वारी पहला है हाँ जी बेटा बोलो जी ऑनलाइन यस ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ BFSC ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪਮੇਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ओके वेलकम बेटा ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਟਰਮਿਨਸ ਆਲਟੀਟਿਊਡ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾइंड सेट है ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ। बहुत अच्छे बेटा शुभप्रीत थैंक यू यस वेरी गुड क्वेश्चन हाँ जी सेकंड क्वेश्चन एक ऑफलाइन भी है वो भी सुन लेने हैं जी फिर इकट्ठे जवाब देने एटीट्यूड की गल कीती है एटीट्यूड तो पहला अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी देखना पवे कि अपन किस दे आले दुआले रहंदे हैं ते साडा लॉ ऑफ अट्रैक्शन किवें काम करता है ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ law of attraction if you are staying in a negative company है ना गलत लोग गलत किताबां पढ़ रहे हो गलत साइट्स से जा रहे हो फिर एटीट्यूड ठीक नहीं हो सकता फिर एटीट्यूड के लेक्चर में कोई असर नहीं होएगा। ठीक है जशन हाय ओके थैंक यू बेटा you have given me another point that I missed। now coming back to Shubhpreet's question कि बहुत बारी इस तरह होता है कि ਅਸੀਂ बदल नहीं कर कुछ नहीं कर पाते उस वेले। I would say beta change the things you can endure the things you can't। जो नहीं कर सकते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। the best way out of the problems is through। मैं एक गल कहंदा हुन्ना बेटा कि एक मुश्किल आई मैं एक हफ्ता परेशान रहा अगली बारी वो मुश्किल फिर आ गई हुण मैं वध परेशान होवांगा कि घट क्यों क्योंकि मैनू उहदे चों निकलना आ गया। एक बारी मैं निकल चुका 2 साल बाद वही मुश्किल फिर आ गई हुण हो सकता मैं परेशान ही ना हो है ना यार बंदा वही मुश्किल वही पहली बारी इन्ना घबराया दूजी बारी घट घबराया तीजी बारी की होया मेरी कैपेसिटी बिल्ड हो गई। सो शुभप्रीत बेटा बहुत वारी मुश्किलों दे विच साडी कैपेसिटी बिल्ड होएगी। जिवें जिवें तुसी तुहाडी कैपेसिटी बिल्ड होई चलेगी उवें उवें मुश्किलों दी मुश्किल घटदी जाएगी। यस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप जदों परेशान होवो की करना चाहिए ते की नहीं करना चाहिए। पहला आपां कर लईए की नहीं करना चाहिए। वेरी गुड डिसीजन नहीं लेना चाहिए चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए है ना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड और की नहीं करना चाहिए लेटना नहीं चाहिए सौन की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि नींद ते आंदी नहीं ओवर थिंकिंग बढ़ती है ना। इकल्ले नहीं रहना चाहिए इकल्ले रहोगे होर प्रॉब्लम होएगी। नेगेटिव थॉट्स सुसाइडल आइडिएशन आती है मैं मरी जावा मैं तो है ही नहीं मेरा तो सब कुछ गया इन एकदम वी डू कैटास्ट्रोफिंग। मुश्किल छोटी जी होंगी है असं कहने सब कुछ ही गया स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देने नो यह काम नहीं करना चाहिए ते की करना चाहिए। यस टॉक टू समवन किसी ने फोन कर लो आजकल तो कितना सौखा राती 12 बजे भी चंगे बंदे ने तो फोन कर सकते हो ना यार मैं नींद नहीं आ रही बड़े थॉट्स आ रहे ने तुसी आधा घंटा गल करोगे ठीक हो जाए है ना। ओके चलो जे गल भी नहीं कर सकते फिर की करो जी। वेरी गुड राइट डाउन योर थॉट्स एंड देन टीयर दैट है ना। कई लोग लिखते नहीं भी कोई पढ़ ना लवे हुणे लिखिया हुणे फाड़ देना चंगी तरह फाड़ दियो पानी च पा दियो अग ला दियो बट
writing is a very good therapy beta, wonderful therapy sir. I have given to some people, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਲੇਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ, ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋ ਲਾਈਟ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਰੇਪੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਲਿਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਪੂਜਾ ਅਰਦਾਸ। पूजा अरदास, वेरी नाइस, बिल्कुल। जो भी भगवान जिसमें भी विश्वास करते हो, मेडिटेशन, राम राम, वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, एनीथिंग, that is a great strength, really I am telling you। ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ। ਯੈਸ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਵੰਡਰਫੁਲ। ऑनलाइन तो और कोई हिंट जी? कीप योरसेल्फ बिजी, वेरी गुड अर्पण, तेरा नाम याद हो गया मेरा। बिल्कुल अपने आप को बिजी रखो, घर की सफाई करनी शुरू कर दियो, है ना। अच्छा, एक मैं तुहानू सच्ची गल दसां भी, जदों तुसीं रगड़ रगड़ के किसी चीज नू साफ करदे हो या पेच लगांदे हो जोर नाल या पेच खोलदे हो, तुहाडी बड़ी एनर्जी निकलदी जे, एंड दिस इज वेरी गुड, वेंटिलेशन हुंदी है। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਰੀਥ ਲੈਣਾ, ਡੀਪ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ, ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰੋ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੂਰ ਬਰੀਥ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਈਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਛੋਲੇ ਵੀ ਬਦਾਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਯੈਸ, ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੌਂਗ ਵਾਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। घर विच अगर वो साइकिल रखी है एक्सरसाइज वाली, वो जोर जोर की साइकिल चला दो, तुहाडी एनर्जी निकलनी चाहिए है, तुसी बिजी होने चाहिए हो। बट अगर तुसी कोई गोली खा के या कोई सौण की कोशिश करते हो, कुछ होर करते हो, थॉट्स वधदे ने, इमीडिएटली उठ जाओ, चेंज करो, अपने घर वालियां नाल गल करो। दीज आर द वेज यू कैन कम आउट ऑफ दैट। एंड बिलीव मी बेटा, मैं जिहड़ी गल मुश्किल वाली तुहानूं सुनाई है ना, शुरुआत जिथों असीं कीती सी कि मुश्किल नूं चैलेंज करो, ते चैलेंज कहंदे कहंदे यू विल रियलाइज वन डे कि सारियां मुश्किलां तुहाडीआं अपॉर्चुनिटीज बन गईयां और तुसीं उहनां दा फायदा उठा लिया। लव प्रॉब्लम्स, pains and problems are inevitable। You know the meaning of inevitable? पेन प्रॉब्लम का मतलब तो पता है, इनएविटेबल मतलब आउणगे ही आउणगे। पेन्स एंड प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल बट टू बी मिजरेबल इज ऑप्शनल। दुख विच किन्ना दुखी होना है ये ऑप्शनल है। टाइम हैगा सर के बस करा हैगा जी। मैनू ऑक्सफोर्ड दी गल याद आ गई, शुभप्रीत ने सुनी होगी शायद। शुभप्रीत सेड के आई हैव अटेंडेड योर अर्लियर 2 लेक्चर्स। सुनी हो ये शुभप्रीत के नहीं ऑक्सफोर्ड दी गल? सर एक बार दस दो तो माइंड च दसांगा ही, मैं दसांगा ही जरूर जी। चलो बेटा सारे रेडी हो, ऑक्सफोर्ड चलिए। हाँ हाँ हाँ, मैं भी तुहाडी उम्र च ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़दा सी, पता ही नहीं सी यार लाइफ कदे मौका देगी ऑक्सफोर्ड जान दा। ओके, 2015 we went to Oxford, इंग्लैंड दे विच लंडन तो 2 आवर्स बस दे उत्ते ऑक्सफोर्ड पहुंच गए जी। साडे ना ये स्वरूप दा बड़ा फायदा हुंदा जी, सब नूं पता लग जांदा भी पंजाब तो आया, इंडिया तो आया, है ना, पुछना नहीं पैंदा किसी नूं। ओके जी, बाजार दे विच एक सज्जन आ के बड़े प्यार नाल पंजाब दे सीगे, मैनूं बड़े प्यार नाल मिले, मैनूं कहंदे साडे घरे आओ, है ना। वो बड़ी देर दे उत्थे सैटल होए सी, बट उन्हां वर्गे बन गए होए सी। मैं नहीं पछाण सकिया बट वो मैनूं पछाण गए। एनी हाउ जदों पंजाबी बोले ना तां मैनूं लगा, अदरवाइज तो मैनूं लगदा सी अंग्रेजां दा ही कुछ
माड़ी मोटी ब्रीड है वो जी हैगी है ना एनी हाउ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਿਸ ਹੋਮ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ you know that elderly person a village person what he said in classic Punjabi he said Dr. Sarabjeet Singh ji ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ नहीं नहीं दुख तो मन में होता है ये नहीं है मानो यस अगर मानोगे तो होगा नहीं मानोगे तो बेटा मैंने बड़ी शर्म आई मैं PhD की मैं इन्ना सियाना नहीं वो पिंड दा बंदा है ना लाइफ दी किड्डी जबरदस्त गल उन्हें दे दी अच्छा कल्ला यही मतलब नहीं जे एक होर मतलब जे दा दुख ता मनने दा हुंदा है दुख तो मानने का होता है सोचो जी पहला अर्थ असी ये कढ़िया भी मानो तो होता है नहीं मानो तो नहीं होता अभी इतने सालों के बाद 6 साल के बाद मेरे को इसका एक और मीनिंग पता लगा बताऊं किसी ने कहा ही नहीं यार बेटा sometimes the problem is suppose of 100 degrees तो हम दुखी भी 100 डिग्री के होते हैं कभी कभी प्रॉब्लम 100 डिग्री की होती है हम 200 डिग्री दुखी हो जाते हैं नोट करो कभी होता है ऐसा प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन हम दुखी ज्यादा हो गए कभी सेम दुखी होते हैं कभी ज्यादा दुखी होते हैं बट अगर एटीट्यूड का सेशन लगाया होगा तो दुख 100 डिग्री का हम दुखी हो रहे हैं 50 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री और अगर और मैच्योर हो गए हैं आप 0 degree. Yes, it is possible. Pains and problems are inevitable, but to be miserable is optional. Optional subject होता है ना कौन सा subject लेना Life gives you options. जिन्ना मर्जी पाठ पूजा कर लो चैरिटी कर लो पेन्स आन गया ही आन गया प्रॉब्लम्स आन गया ही लेकिन मिजरेबल दुखी कितना होना है इट इज इन योर हैंड्स सो बेटा change your attitude and your life will be changed and your attitude will determine your altitude. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much, sir. Thank you very much for your wonderful session. And you have, I think, covered A to Z of the attitude, and you have proved that the attitude plays a great role in our success. And it plays, you have told that 85% role in our success. And there is a famous quote that it is our attitude, not aptitude, which determines your altitude. So attitude is everything. Sir, you have motivated our students how they can change their attitude and how they can be successful in their life. And you have also given, sir, various tips how they can change their negative attitude to positive attitude. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Narinder for formal vote of thanks. Dr. Narinder, please. Good evening to all. I have no words to express my gratitude to sir for a wonderful lecture and a nice lecture and a motivated lecture. So it is my privilege that I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly or indirectly contributed for the conduct of this lecture on
attitude determines the altitude. So you also come across the little meaning of attitude and altitude. So I hope you will be on the pinnacle of the altitude. And with these words, at the outset, I would like to thank the IDP cell, GADVASU, for providing opportunity and facilities for the successful conduct of this seminar. I would like to thank to Dr. Inderjeet Singh, Vice Chancellor, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, for his motivation and inspiration for the conduct of this webinar. My sincere thanks are due to Dr. SPS Ghuman, Principal Investigator and Dean, College of Veterinary Sciences, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University. I also express my sincere thanks to Dr. Ramanik Burma, Dean, College of Dairy Science and Technology, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, for their immense support and guidance throughout the preparation of conduct of this lecture. I would like to express my sincere gratitude for today's chief guest and the resource person, Dr. Sarabjeet Singh, Professor cum Head, Department of Agricultural Journalism, Language and Culture Director, University Counseling and Placement Guidance Cell, Punjab Agricultural University, Ludhiana. I thank you, sir, for sparing your valuable time to share your experience, a rich experience to motivate the students, to inculcate them the skills of this particular attitude, so that they can have any problem at any stage of their life, they will come out of that. So I thank you a lot from the core of my heart, from the bottom of my heart. So thank you very much, sir. It was such an enlightening lecture. You all have realized it and you are feeling it, and you will be feeling it throughout your life. So it is a wonderful talk on the attitude which determines your altitude throughout your life. I hope all of you have got the idea about what is altitude and how you have to achieve that altitude in your life. And I hope this lecture or this webinar will be useful in your personal endeavors, in your professional endeavors, and everywhere in every step of your life. So with these words, I would like to thank Dr. Vrinder Pal Singh, Dr. Nitin Wakchure, the organizing secretaries, for their guidance, and also Dr. Tejashwar Preet Kaur, coordinator, for the technical support. And lastly but not the least, I thank all the students on offline present as well as online present for their active participation in successful conduct of the webinar. You people are always be, a source of inspiration to all of us and even to those who are having the lecture. So you always act as a source of inspiration for all of us to conduct such a webinar in the near future. So I thank you very much. Thanks a lot. Especially thank you the resource person, Dr. Sarabjeet Singh. So my heartiest and the lot of respect for you from the behalf of the students, that you come here and you spare your valuable time and you connect them with those skills which actually is required in their initial years. So thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you very much, sir. Thank you.